बोलने के लिए थे महोदय। पिछले 5 वर्षों के अंदर 5 लाख से ज्यादा कंपनियों का नाम कंपनी रजिस्ट्रार के रजिस्टर से हटाना पड़ा। केवल 2 साल में 17, 18 और 89 में 3,79,000 जो कंपनीज थी उनका नाम हटाना पड़ा। और ये पाया गया कि ज्यादातर कंपनियां बैंक फ्रॉड, चीटिंग, राउंड ट्रिपिंग, इन सारी चीजों के अंदर शामिल हैं। और इन 5 लाख में करीब 2.38 लाख कंपनियां जो थी वो शेल कंपनियां थी। एक ही एड्रेस पर 100 कंपनियां हैं, एक ही, और बड़ी संख्या में ऐसी कंपनीज थी जिनका ना कोई पता ठिकाना था, ना कोई इनकी जगह थी। तो सचिव महोदय, क्यों ये बिल लाना पड़ा, आप इसी से अंदाज कर सकते हैं। और इन सारी शेल कंपनियों के पीछे कहीं ना कहीं कोई सीए का दिमाग था, कहीं ना कोई सीए उसके अंदर शामिल था। इतना ही नहीं सचिव महोदय, मैं पिछले दिनों ED arrest CA in Hyderabad for aiding shell companies launder funds to Hong Kong. ED arrests Delhi CA in money laundering case linked to fertilizer scam. 8 chartered accountants arrested for GST fraud. Sati Mahoday, 16 for gambling arrested, 3 chartered accountants arrested. CGST official and 2 CAs arrested on charge of extortion. सती महोदय, ये जो पिछले 5 साल के अंदर जो बड़े पैमाने पर ये पाया गया कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो कहीं ना कहीं, और उसमें कुछ लोग हैं, वो सारे लोग नहीं है, कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के शेल कंपनी और इस प्रकार के और भ्रष्टाचार के खिलाफ में हैं। और इसलिए सरकार को मजबूरन इस बिल को लाना पड़ा है। सती महोदय, जैसा मेरे पूर्व के सदस्य ने कहा, हम उनकी परीक्षा में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। उनके एग्जाम में, उनके करिकुलम में, उनके रिजल्ट में, उनके लाइसेंस के अंदर, उन सारी चीजों में उनको स्वायत्तता है। केवल एक जगह जहां सरकार हस्तक्षेप नहीं बल्कि उसको मजबूत करना चाहती है, वह डिसिप्लिनरी कमेटी के बारे में। और मैं सदन को बताना चाहूंगा अभी क्या थी स्थिति सती महोदय। 4 कमेटी है डिसिप्लिनरी कमेटी, और 3 के चेयरमैन कौन है, तो ICI के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 3 कमेटी के चेयरमैन हैं। और एक कमेटी के एक जोन के चेयरमैन कौन है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो 4थे जोन के डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन है सती महोदय। तो इसीलिए चूंकि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो चेयरमैन होता है चुनाव जीत कर आता है, लाखों रुपया करोड़ रुपया खर्च होते तब वो चेयरमैन बनता है, और इसलिए अपने मेंबर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है। और इसलिए पिछले वर्षों में पाया गया कि सैकड़ों की संख्या में केसेस पेंडिंग है, वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, दबा के रखा गया, फ्लिम्सी ग्राउंड पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया। यहां तक कि CBI, ED और सरकार ने जो कंप्लेन रेकमेंड किया था उस पर भी वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सचिव महोदय, जो लोग कहते हैं कि उनको एक्सपर्टाइज नहीं है, CA होना चाहिए, मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो डायरेक्टर डिसिप्लिन का जो पोस्ट, डायरेक्टर डिसिप्लिन, वो CA होगा। और 22 लोग रहते हैं उसके अंदर कमेटी में, डायरेक्टोरेट में, उसमें 11 CA होंगे, और वही लोग पूरा केस तैयार करके और डायरेक्टोरेट के सामने प्रेजेंट करेंगे। और सती महोदय, जहां तक कमेटी की बात है, कंपोजिशन की बात है, केवल सरकार ने यह किया है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो नॉन CA होगा। और सती महोदय, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप कहते कि एक्सपर्टाइज नहीं है, कल डिसिप्लिनरी कमेटी का जो निर्णय होता था वो अपील में कहा जाता था, ट्रिब्यूनल में जाता था, वहां तो कोई CA नहीं है। ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, वहां तो कोई CA नहीं है। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहां तो कोई CA नहीं है। तो सती महोदय, केवल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो विरोधाभास था, कन्फ्लिक्ट था, उसी को केवल दूर करने का प्रयास किया गया। और केवल ये कहा गया है कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो नॉन CA होगा। और पहले सरकार नॉमिनेट करती थी सौती महोदय उसके मेंबर्स को, लेकिन अब सरकार नॉमिनेट नहीं करेगी। जो CA की काउंसिल है वो एक पैनल तैयार करेगी, और उसी पैनल में से सरकार जो नामों का चयन करेगी। तो जो राज्य केंद्र सरकार को नॉमिनेट करने का अधिकार था वो भी इसमें से समाप्त हो गया। आप पैनल बनाइए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का, सरकार उसमें से चयन करेगी। आप मेंबर्स का पैनल बनाइए, सरकार उसमें से चयन करेगी। इसलिए सौती महोदय, मुझे इसलिए इसमें कहीं कोई
इस प्रकार की बात नहीं है सती महोदय। और फिर ले मेंबर्स का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, तो कोई क्या वित्त मंत्री बनने के लिए और हार्वर्ड से पास होना जरूरी है क्या? या स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो क्या एमबीबीएस डॉक्टर हैं क्या? तो सती महोदय, एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन उस फील्ड का ज्ञान जरूर उसको होना चाहिए सती महोदय। तीसरी बात सती महोदय कि इसका जो फंड्स है 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का आईसीआई के पास फंड इकट्ठा है, और इसे सरकार ने ये नहीं कहा कि उस फंड पर हम कोई उस फंड को लेने जा रहे हैं। केवल ये कहा कि जो सीएजी है, वो सीएजी के जो ऑडिटर्स का पैनल है, उसमें से आप नाम तय कीजिए, और आप जो नाम तय करेंगे वही ऑडिट करेगा, सरकार या सीएजी ऑडिट करने नहीं जा रही है। और सती महोदय, पिछले दिनों कई प्रकार के मामले आए, समय नहीं है। एक समय में आईडीबीआई का टियर 2 का जो बॉन्ड था, उसमें करीब 800 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया गया, जो उसके रेगुलेशन के खिलाफ में था। बैंकों में पैसा जमा करने की होड़ मची रहती है, और लोगों को मालूम है कि अगर किसी बैंक में पैसा जमा करेंगे तो उसके बदले में क्या मिलता है सती महोदय। सती महोदय, केवल जो डिसिप्लिनरी कमिटी है उसको स्ट्रेंथन करने का काम किया गया है। सती महोदय, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, दुनिया के अधिकांश देशों में, चाहे यूएसए हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, साउथ अफ्रीका हो, दुनिया के सभी देशों के अंदर जो अकाउंटिंग जो संस्थाएं हैं, उनके जो डिसिप्लिनरी कमिटी है, उसके अंदर नॉन सीए जो हैं वही उसके मेंबर्स होते हैं, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे, सेपरेशन ऑफ इलेक्टेड बॉडीज मेंबर्स फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन एंड डिसिप्लिनरी प्रोसेस। अमेरिका में तो सती महोदय 56 बोर्ड्स है, या तो भारत में एक केवल आईसीआई है जो सीए की डिग्री प्रदान करता है। अमेरिका में 56 बोर्ड्स है, और उस बोर्ड्स के जो भी अपॉइंटमेंट होता है वो सरकार करती है। साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यहाँ तक कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, उसके 175 मेंबर है, 130 देशों के लोग उसके मेंबर हैं। उसकी अनुशंसा है कि डिसिप्लिनरी कमिटी के अंदर नॉन जो अकाउंटिंग के लोग हैं वही उसके मेंबर होना चाहिए, ताकि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर सके, और नहीं तो उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण वो उसका उसमें नहीं कर पाएंगे। सती महोदय, एक और विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कोऑर्डिनेशन कमेटी की क्या आवश्यकता है। सती महोदय, 3 संस्थान हैं, और अगर तीनों 2000 में एक एमओयू साइन किया इन लोगों ने, और उस एमओयू में यह प्रावधान था कि मिलकर कोऑर्डिनेशन करेंगे। 16 साल हो गया, एक बैठक नहीं हुई, बैठक का एजेंडा पता नहीं, क्या निर्णय लिया गया। अब सरकार ने कहा कि तीनों जो संस्थाएं हैं उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, जिसको प्रिजाइड करेंगे कंपनी सेक्रेटरीज के, जो कंपनी अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं, और तीनों संस्थाओं के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी उसके मेंबर होंगे। इसमें क्या आपत्ति सती महोदय? इसका भी विरोध किया जा रहा है। और सती महोदय, जो एक सबसे महत्व की बात है, अभी तक केवल कार्रवाई करने का अधिकार था चार्टर्ड अकाउंटेंट पर, लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स है उन पर कार्रवाई करने का चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट को अधिकार नहीं था। और ये सदन सत्यम स्कैंडल के बारे में जानता है, 7,100 करोड़ से ज्यादा का आईटी का फ्रॉड हुआ था सती महोदय, और उसके बाद आईसीआई ने खुद जो है रेकमेंड किया कि जो जो कॉर्पोरेट जो फर्म्स हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के, उन पर भी कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाए। तो सती महोदय, इस बिल के द्वारा केवल मेंबर्स नहीं, अगर कोई मेंबर जो किसी फर्म का सदस्य है और लगातार 5 साल तक शिकायत अगर मिल रही है, तो वैसी स्थिति में अधिकतम 25 लाख रुपया तक उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, और उसके मेंबर को या उसको डिबार किया जा सकता है। और सती महोदय, पहले कोई टाइमलाइन नहीं था कितने दिनों में प्रोसीडिंग पूरी होगी। अब इसमें प्रावधान किया गया है कि 365 दिनों के अंदर प्रोसीडिंग पूरी हो जाएगी। पहले प्रावधान था कि कोई भी विड्रॉ कर सकता है, आपने कंप्लेंट फाइल किया और मिल गए, और कुछ अंडर हैंड डील हो गया, विड्रॉ कर लिया गया। अब इसमें प्रावधान किया गया कि कोई भी विड्रॉल कंप्लेंट नॉट परमिसिबल, कोई भी उसके अंदर कोई और इसको कंप्लेंट को विड्रॉ नहीं कर सकता है। और सती महोदय, पहले जो चेयरमैन था उसी को सेक्रेटरी का भी पावर था, सारे पावर्स चेयरमैन के पास थे। अब नया प्रावधान किया गया है कि जो प्रेसिडेंट होगा, जो चेयरमैन होगा और जो सेक्रेटरी होगा, दोनों के पावर के अंदर और विभाजन किया गया, दोनों के पावर को अलग अलग किया गया है। और सती महोदय, इतना ही नहीं, तो साथ ही साथ मैं सदन को ये भी बताना चाहूंगा, जो एनएफआरए बना है,
नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑथोरिटी। तो अब उसमें यह प्रावधान किया गया कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो अनलिस्टेड कंपनीज है 500 करोड़ रुपए से ज्यादा जिनका टर्नओवर है, जो बैंक्स है, जो इंश्योरेंस है, उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो एनएफआरए और निर्धारित करेगी। इसलिए सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी आश्वस्त करना चाहूंगा, बड़ी स्ट्रांग लॉबी है, एक एक मेंबर के पास जाते हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो संघर्ष, जो ऐलान किया है, उसको परिणति तक पहुंचाने के लिए आवश्यक था कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो बॉडी है, इसके जो डिसिप्लिनरी, इसमें जो डिसिप्लिनरी कमिटी है, उसको और स्ट्रेंथन किया जाए। और ऐसा नहीं सोती महोदय कि सारे के सारे लोग गड़बड़ है। अभी मैं गया था अबू धाबी, एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल के अंदर, अबू धाबी में 800 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल अबू धाबी में, केवल दुबई के अंदर 1500 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। और जब कोई कहता है कि मैं सीए हूं, तो हमारी उसकी प्रतिष्ठा समाज के अंदर तुरंत बढ़ जाती है। आईएएस है या आईपीएस है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अधिकांश चार्टर्ड अकाउंटेंट ईमानदारी से काम करते हैं। और जैसा पीएम ने कहा, आईसीआई के सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा कि क्लाइंट के लिए काम मत करो, देश के लिए काम करो। क्लाइंट के लिए काम करना अलग बात है और देश के लिए काम करना अलग बात है। इसलिए सभापति महोदय, मैं निर्मला सीतारमण जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनकी प्रेरणा से ये बिल इस सदन के अंदर आया है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई इनकी ऑटोनॉमी को प्रभावित नहीं किया जाएगा। केवल जो गलत लोग हैं, जो मिसकंडक्ट करने वाले जो लोग हैं, उन्हीं पर कार्रवाई करने के लिए इसके अंदर कड़े प्रावधान किए गए। धन्यवाद। धन्यवाद सुशील मोदी जी। माननीय मंत्री जी का रिप्लाई। धन्यवाद sir. So I thank all the 21 honorable members who have participated in this discussion today. This is a very important step being taken. There is one bill which is now passed through the Lok Sabha, aiming to bring in certain amendments to the three acts, which are the Chartered Accountants Act, the Cost and Works Accountants, and the Company Secretaries Act. Amendments are being brought in through one legislation so that all the three can be brought in with the same kind of amendments. And that has been after good consultation with the legislative department, who have advised us that one amendment through one legislation, the three can be amended because the objective is similar. Objective is also to bring all the three on par and strengthen all the three of them without in any way affecting the autonomy that they enjoy. Now, this is not done purely by discussions that have been held by the ministry. There has been a very well constituted committee, the Meenakshi Datta Ghosh Committee, which was formed in April 2017, and who submitted their report in September of 2017. And 2017, all the recommendations have been studied in detail. And in an era where self-regulatory model has already come into question, global best practices are very clearly saying this model probably cannot actually meet up with all the expectations professional bodies have to characterize themselves with. And therefore, the Meenakshi Datta Committee has given a lot of inputs on how to make these more robust. Equally, sir, in the last 8 years, particularly when after Prime Minister Modi 2014 onwards started giving a lot of attention to the economy, particularly in supporting all sections which have the inclination towards becoming entrepreneurs, giving startup the ecosystem that they so require, and making sure that the startups ecosystem is not just a blessing for metropolitan cities. We also aligned ourselves with the tier 2, tier 3 cities where smaller entrepreneurs are also being addressed through financial inclusion and through the stand-up
program. Today is the day when Stand Up was launched several years ago in 2016 by Prime Minister Modi, and the Stand Up India together with Startup India show that companies today are eager to register themselves as LLPs, and many companies and LLPs have got incorporated in the last few years. And because these LLPs are bringing in a newer kind of environment, we also see that the requirement for regulating them also needs to be robust. So the country has witnessed rapid changes in the way in which the economy is now being profiled. And therefore, even with the Companies Act and even with the IBC, we need to see how the LLP can make these companies which are smaller, driven by individuals who have innovative ideas and who today are contributing to the Indian economy in a very big way. So at this time, the sanctity of the audited financial statement, which is where all the chartered accountants' role come into play, has got to be maintained, has got to be given its due position, and we need to have, therefore, audit and certification quality. We need to also have a favorable investment climate being brought in. And therefore, a line which I said in the Lok Sabha, I like to repeat here. I recognize the importance of the three pillars: the chartered accountants, the cost accountants, and the company secretaries in the corporate governance structure. And if the corporate governance structure has really got to be robust to meet with the global investment expectations about our standards of audit, about our standards of investment policy, about how auditing certificates are being given, we need to have greater robustness brought in, and also a level of accountability brought in. Many members have made my explaining a bit lesser because they recognize that since after Satyam scandal, subsequently till 2013 when the ILFS scandal happened, we have repeatedly been questioned about the number of failing chartered accountants or chartered accountants who did not deliver as was the expectation through the letter and spirit of the act needed to be acted upon. And in that, you find that over and over again, questions are being asked as to why wouldn't it be a more transparent process. With these concerns, a lot of consultations had been held, stakeholders have been repeatedly met, and also even a standing committee once earlier, sir, had gone through these issues. And at that time, it was felt, and it was in fact recommended by the standing committee then, that we need to have a greater transparency in the mechanism. And that is where, from that standing committee, we've had this voice for greater transparency to be brought in. Now, there was also a question as to why there should be only one act. Will it mean that the three institutions are now going to be governed by this one act? I would like to dispel any doubts that honorable members might have. Those three acts are there. They are going to continue. They will govern the functioning of the three institutions. But this one act, which is now going to have an impact on each of the three acts, is only to the limited extent of bringing in greater transparency in the disciplinary processes with which these institutions function. And therefore, the three institutes governed by their respective acts will continue to have the responsibility for the functions which have been with them always, whether it is for qualifying people, licensing people, regulation of their conduct. All this will continue to be with them. And even as regards students, the institutes had earlier also full powers, and that shall not be interfered with. That will continue to be with them. So whether it is a question of thinking about increasing the fee or registration of members and even certification of practice, they're all now, as is before, as it was earlier, they continue to be, and this act has nothing to do with that at all. The council will have full powers to fix the fees and certifying
the members. So there were references made to Section 18 of the Act saying administering funds of the institutions. They will continue to be as per the provisions of Section 18 of the Act. So there is no change at all in the composition of the councils responsible for the management of affairs of the institutes. The ICA has 40 members, 8 of them government nominees, 32 elected members. ICSI and the Institute of Cost Accountants of India, 5 government nominees and 15 elected members. The institutes, therefore, shall continue to function under overall control, guidance, and supervision of their respective councils, which are as per their acts. So, therefore, sir, I just want to emphasize that in the proposed amendments, the council shall continue to constitute these bodies as per the existing practice. Government will not constitute them. That has to be, I would like to reiterate that point, that the government does not constitute these. There will also be no change in the number of members in these bodies. So I want to assure members that the proposal which are in the Act will have to be laid bare to understand it. The coordination committee, about which a lot of members have spoken, it may be noted, sir, that the 2 other institutes, the cost accountants and the company secretaries of India, have not objected. In fact, the Chartered Accountants Institution also in September of 2019 itself, under the chairmanship of the Secretary of Corporate Affairs, has also agreed in a meeting with the Secretary of Corporate Affairs in September 2019, agreed for the constitution of a coordination committee. So I don't think we should have any doubts if one of the institute has not supported and the other 2 have. All the 3 have, in fact, been in favor of forming the coordination committee. So I just want to highlight the fact, sir, that in the year 2000, in an MOU which was signed by the ICSI, which is the company secretaries, with the ICAI and the Cost Accountants Institution, a coordination committee was formed indeed. There was a coordination committee, but it has not even worked all right. So unless this new coordination committee is going to come into play, the old one being a point of reference where members have raised this question saying such a committee exists, why do you want a new one? It is only because the old one has not even taken off. It is important to understand also, sir, that this coordination committee is not a new idea at all, not only for the 3 institutions, but there are institutions like IIMs, Indian Institute of Management, which have a coordination committee. The IIIT has a coordination committee. In fact, even for those who were voiced concern, saying, why should a lay person be heading the committees? There should be a member who understands chartered accountancy. I'd like to say whether it is the NAFRA, which is the NFRA, or even the IIITs. The IIIT's chairman is the minister himself. So none of their functioning has gotten affected negatively just because a non-member, non-professional member is being brought in. Globally, the conduct of chartered accountants who are auditors and public interest entities are regulated by independent authorities. That is what is happening with NAFRA also. The PCAOB of USA, the FRC in UK, the ASCI in Australia, the IRBA in South Africa, the CPAB in Canada are all headed by people who are not professional chartered accountants. So the National Financial Reporting Authority, the NAFRA, sir, which actually looks at public interest enterprises, many members did speak about it, are also dealing with these matters with non-members, with lay members. So their independence from the profession has not in any way undermined the decision-making that they have been all the while engaging in. So, and also the proposed amendments are very much in line with the core principles which have been given by the independent audit regulators, which is a global body
International Forum of Independent Audit Regulators, which is normally the body to which all the chartered accountants do refer for guidelines as regards best practices. And also the International Federation of Accountants, which also periodically gives independent, which is a non-governmental body, sir. It's an international body that also gives a lot of these guidelines. The Institute of Chartered Accountants of India is a member of this International Federation of Accountants. So if they have given guidelines, why would they be in discord with the existing institutions? The standing committee that I was referring to earlier, which had already gone through this matter in 2004-5, in its 11th report, sir, very clearly, which was given in 2003, said that it recommends strongly majority of lay members in the disciplinary board. And I like to put on the record a word, which is a paragraph, which I'd like to take from that standing committee's report. And I quote, sir, the committee recommends that such a body should be headed by a person not below the rank of joint secretary belonging to the legislative service. Two members should be from the council and two should be outside experts from the field of law or accountancy, unquote. So the standing committee then in 2003 has actually looked into it and recommended similarly. Whether it is the UK, the USA or South Africa, and in particular the state California, have all got lay members, and the current standing committee has also gone through this bill, and therefore any suggestion that a select committee reference be made would be only superfluous because members of the Rajya Sabha are also members in that standing committee, which has actually looked into the details. The current standing committee Please, gave it and then please. submitted in the Lok Sabha post, which I've come here, sir. I'm referring to 2003, but even now, the current standing committee has gone through it, not 2003 and 2003. So, I just wanted to therefore highlight one concern some members have referred to here, saying why should the status of an actionable complaint be already put up? Won't it hurt the cause because till it is proven that the person is guilty, why should you put it out? So putting the status of an actionable complaint, sir, in public domain or entering them in the register of members, many of them have also highlighted that, does not intend to victimize the member. On the contrary, the manner and the interval of putting out such information in public domain and entering it in the register of members shall be in accordance with the regulations framed by the council itself. So there's no way in which somebody is going to pick and choose, saying, choose to put this in public and not somebody else's name. So there is a system and a protocol decided by the council itself, which will govern it. So, sir, the two institutes have not objected to putting out names such as this. So largely, I think, sir, the points that have been raised by all the members have been addressed. I just want to underline the fact that it is a global best practices which have governed many of the features of this bill, which is now before us. It is necessary that we appreciate that without touching the independence of the autonomy of these institutions, we'd like to bring in these changes, sir. So I think largely the points which have been raised by the members have been addressed, and therefore I appeal to all the members to kindly pass this as has come from the Lok Sabha, because this is with an intention of making the three institutions a lot more transparent in their disciplinary matters and raise the quality of the disciplinary processes. Above all, I think this would also facilitate India to be able to support institutions and firms which can be encouraged by the council to create something similar to the Big Four
which we periodically talk about, but completely of Indian origin. If the quality and if their strengths are being encouraged through this, I would think it is possible sooner to have institutions of that size which can mate up with the global demands. Thank you very much, sir. Thank you, Honorable Minister. I shall now put the motion moved by Srimati Nirmala Sitharaman to vote. The question is that the chartered accountants, the cost works accountants and the company secretaries amendment bill 2022 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Announcement regarding notice of amendments. Honorable members, I have to inform that the Speaker Lok Sabha in the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha has treated certain consequential changes pertaining to the change of year from 2021 to 2022 as patent errors in clause 10, 25, 60 and 93. Accordingly, the relevant amendments proposed by Sri John Brittas, member at serial number 10, 57, 58, 108, 109, 159 and 160 have become infructuous and therefore are not to be moved. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There are two amendments, number 2 and 3 by Sri John Brittas. Are you moving? Amendments moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendments are negative. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 4 stands part of the bill. There is one amendment, number 4 by Sri John Brittas. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 4 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 4 is adopted. Clause 5 stands part of the bill. There is one amendment, number 5 by Sri John Brittas. Sir, along with Suresh Prabhuji. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall Suresh now put Prabhu- clause 5. I shall now put clause 5 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 5 is adopted. Clause 6 stands part of the bill. There is one amendment, number 6 by Sri John Brittas. I move, sir, again.